17 variant variant 11. So let's start. What must follow when scarcity exists? Consumers have to make choices, governments are unable to supply public goods, producers must be misallocating resources, and the workers must be earning low wages. So whenever you have Consumers have to make choices. yeah, scarcity leads to choices, choices leads to opportunity cost. So obviously consumers will have to make choices. The answer should be A. What is likely to be introduced in the market for bus travel if an economy moved from mixed economy to a market economy? अगर mixed से आप market पे जा रहे हो, market economy पे जा रहे हो, basically you are transitioning from one economic system to another. So क्या change होगा in the market for bus traveling? Allowing companies to bid for bus routes. Allowing companies to bid for the bus routes. क्यों? क्योंकि अब आपकी फ्री मार्केट की तरफ जा रहे हो, जाहिर है पब्लिक जो प्राइवेट ओनरशिप है वो बढ़ेगी, and that is why you will have to allow them to bid for new routes. Look at question number 3. The diagram shows the production possibility frontier for maize and beans has changed from PPF1. So this was your original, जिस पे आप 100 maize and 100 beans बना रहे थे tons of. Say now the PPC has shifted outwards pivot कर गया PPF 2 पर. What has happened to the opportunity cost of maize and the returns to the factors producing beans? तो पहले आप opportunity cost निकाल लो भाई, maize की opportunity cost कितनी हो गई? अगर आप 1 ton maize produce करते पहले, you will have to sacrifice 1 tons of bean. सही है? When you were at PPF 1. Now if you are at PPF 2, you can either produce 100 tons of maize and 200 tons of beans, which means that in order to produce 1 ton of maize, you will have to leave 2 tons of beans. You will have to sacrifice more beans. The opportunity cost of maize has increased. Say एक तो ये. Now returns to the factors producing beans. What will happen to the factors that are producing beans? Remember the PPC for beans is shifting outwards. सही है? Like आपकी जो production है beans की वो बढ़ गई है. जब आपकी production बढ़ रही है, जब productivity बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है? The returns for the factors should also increase. In order to compensate them for higher productivity, more number of units produced, you will have to give them higher returns. Say, Right. the answer should be. An individual buys a ticket to visit a government-owned art gallery. How would this visit be classified by an economist? Private and merit. Individual buy a ticket. Say, ticket खरीदा है, जाहिर है it will be a private good. सही है? And a government-owned art gallery थी, but still ticket था. So it will be a private good. And merit क्यों होगा? Merit इस वजह से होगा कि if it is it's an art gallery set up by the government, it will be generating tourism, it will be attracting people, it will be giving revenue to other local businesses. The diagram shows a shift in the farm supply curve from S1 to S2. What may have caused this shift from S1 to S2? S1 से S2 चला गया, पीछे चला गया supply curve. मतलब आपकी सप्लाई जो है फॉल कर गई. So why would it happen? A decrease in the cost of production, इससे supply outward shift होती है. A decrease in होगा the सर. popularity of the farm's product, अगर popularity का मतलब demand. A decrease in the subsidy, ये हो सकता है subsidy आप हटा दो. और चौथा क्या है? Decrease in good tax decrease of the supply outward shift होता है. Now look at question number 6. A change in the price of a good causes an increase in the quantity of the good demanded. Price change होगा would cause an increase in the quantity of the good demanded. What would be the nature of the good and the direction of the price change for this to be certain to happen? Price किस तरह से change हो कि good की जो quantity demanded है वो बढ़ जाए? Sir, normal good price. हाँ, अगर normal good की price Change fall rise करेगी तो quantity fall demanded increase, हाँ ना?
अगर हाँ राइट क्वांटिटी डिमांडेड तो प्राइस फॉल करने राइट से राइट। इंक्रीज। सही। तो इन्फीरियर में क्यों नहीं इंफीरियर होगी? इंफीरियर में ही होगा कि अगर आपका प्राइस फॉल करता है, सही है, तब एक तो ये है कि आपकी इंफीरियर की प्राइस फॉल करने की वजह से इट विल बिकम मोर इंफीरियर, तो क्वांटिटी जो है वो फॉल कर जाती है मजीद। सही है। और दूसरा ये होता है ओके कि इंफीरियर ऑल्सो लार्जली डिपेंड्स अपॉन योर इनकम, कि आपकी जाहिर है कि इनकम पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है ओवर द कम हो रही है। सही है। राइट। बट नॉर्मल गुड के उसमें हम लोग वी आर सर्टेन के अगर प्राइस फॉल करेगा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज करेगा क्वांटिटी इंक्रीज होगी। Which combination is most likely to result in the demand for a product being highly price elastic? द नंबर ऑफ अगर सब्स्टिट्यूट्स लार्ज हो और ज्यादा परसेंटेज इनकम स्पेंड कम हो। number of substitutes should be higher and the percentage of income is spent on the product should be also high. सही है। नहीं अगर कम लार्ज होनी चाहिए परसेंटेज, ना सर। नहीं, अगर कम होगी तो आपकी पीईडी विल बी इन इलास्टिक ना। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव स्टेशनरी आइटम, पेंसिल है, पेंसिल पे जो आपकी परसेंटेज ऑफ इनकम होती है स्पेंड वो बहुत कम है। अगर पेंसिल का अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाए, सही है, तो हाँ उसकी जो राइट। डिमांड है वो इससे ज्यादा फॉल नहीं करेगी। बट मोबाइल फोन है, उस पर आपकी परसेंटेज ऑफ इनकम ज्यादा स्पेंड होती है, अगर उनके प्राइसेस जो है वो 10-20% भी इंक्रीज होते हैं, ऑब्वियसली द क्वांटिटी विल फॉल बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। Look at increases the price of it from $4 in an attempt to increase the total revenue. The table shows the outcome of the policy. Price the $4, total revenue the 400, 4 लाख, 5 परफेक्टली लाख, इलास्टिक है 6 ये। लाख प्राइस इंक्रीज हो रहा है। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ क्या है जल्दी से। परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ। नहीं, परफेक्टली इलास्टिक में तो मेरा बच्चा प्राइस ही नहीं चेंज होता ना। परफेक्टली इलास्टिक इज ओ डिमांड कर्व लाइक सॉरी दिस। सॉरी सर, इन इलास्टिक, हाँ परफेक्टली सॉरी रेवेन्यू उसमें इन बढ़ता है। इलास्टिक, या आप इन एक एक इलास्टिक, डॉलर सॉरी से सॉरी। प्राइस को इंक्रीज करा रहे हो, आपका रेवेन्यू भी एक एक लाख से बढ़ता जा रहा है, बिकॉज क्वांटिटी इज स्टैग्नेंट, क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्वांटिटी नीचे जो इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। Look at question number 9. A firm establishes that price elasticity of supply of its product has a value of 0.3. तो ये PES की वैल्यू क्या है? इन इलास्टिक है। 0.3. What is likely to be true about the firm? It has unused productive capacity, it has unsold stock, it uses high proportion of perishable raw material, it uses factors of production that are सी easily होगा। substituted. सी होगा। सी है। पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स आप यूज करते हो, वो स्टोर नहीं हो सकते, वो जैसे ही आएंगे प्रोसेस होंगे, दैट इज इट, आप गुड को स्टोर। सर अनसोल्ड स्टॉक की भी तो पीईएस जो है वो इन ज्यादा इलास्टिक होगी, होती है ना। ज्यादा होगी, इलास्टिक होगी। आपके अनसोल्ड स्टॉक है, आप उसको रिलीज कर सकते हो मार्केट में प्राइस बढ़ने के बाद, लाइक यू हैव राइट। स्टोर्ड। हाँ सही है। So you look at question number 10. There is a reduction in the world oil supplies due to war in some supplying countries. At a time the winter, at a time when the winter is in some importing countries was much colder than usual. The diagram shows original equilibrium P. What will be the equilibrium price of oil in these circumstances? ये आपका original supply and demand curve है. Oil supplies due to war in some countries. Reduction again. डिमांड बढ़ेगी। Demand will ओ move to S1 एंड सॉरी S1 एंड D1. 4। So the price will be P4. The new 4। equilibrium price will be P4. ये हो जाएगा आपका नया इक्विलिब्रियम। Good X is a substitute of good Y and a complement of good Z. What would happen after a fall in the price of X?
अगर x का प्राइस फॉल करता है, what will happen to the demand for substitute? Y की डिमांड फॉल कर जाएगी because it's a substitute. More people will switch to x and a Z will complement of z. rise. हाँ, z की डिमांड बढ़ जाएगी. So the demand for x will rise, the demand for x and y will rise. नहीं, the demand for y will fall and the demand for z will rise. ये Right. हो यही जाएगा. होगा. Means a specific indirect tax on a product. When will the tax cause the greatest reduction in consumer surplus for the buyers of the product? When will the tax cause greatest reduction in consumer surplus? सबसे ज्यादा रिडक्शन कब आएगी कंज्यूमर सरप्लस में? डिमांड तो इनलास्टिक होनी चाहिए, ये तो मुझे पता है, सप्लाई का नहीं पता. देखो, कंज्यूमर सरप्लस में सबसे ज्यादा रिडक्शन जब आएगी जब डिमांड इनइलास्टिक हो, सही है? क्योंकि कंज्यूमर के नॉट स्विच. यू हैव टू ऑप्शंस, एक परफेक्टली, एक प्राइस इनइलास्टिक सप्लाई, एक प्राइस इलास्टिक है. दोनों को बना के देख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा. This was elastic supply. सही, दोनों जगह पे टैक्स लग गया. पहले कंज्यूमर सरप्लस ये सारा एरिया था. Now the consumer surplus is reduced by this area. सही है, because of a higher price increase करने की वजह से. Now what will happen in this case? S naught D naught यहाँ पे ये वाला कंज्यूमर सरप्लस से चला गया एरिया. Now which one will be greater? कौन सा वाला एरिया ज्यादा होना चाहिए? इनइलास्टिक सर. नहीं, इलास्टिक. सप्लाई इलास्टिक होनी चाहिए ना आपकी. लाइक अगर ज्यादा प्रोपोर्शन टैक्स लगेगा तो प्रोड्यूसर्स भी क्वांटिटी सप्लाई को नीचे लेके जाएंगे ना. यहाँ पे असल में थोड़ी छोटी डायग्राम्स बनी है, वरना आपको आसानी से और पता लग जाता है कि क्वांटिटी का फॉल जो है वो ज्यादा आना चाहिए because it is supply is elastic. So the product should have inelastic demand and supply should be elastic. प्रोड्यूसर के पास अथॉरिटी हो, अदरवाइज इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो प्रोड्यूसर पे भी आ जाएगा ना अगर सप्लाई इनइलास्टिक होगी तो. सही है, तो द आंसर शुड बी सी. As you look at this question, the table shows the maximum amount three students would be each willing to pay for a taxi to take home from the nightclub. Jane is willing to pay 10, Sarah 8, Yasmin 6. Assume they share a taxi fare as shown in the table, which show which shows how much they each should pay so that they each obtain the same consumer surplus same आए. ये इनकी willingness है. सही, कंज्यूमर का मतलब प्राइस पेड. सही है, विलिंगनेस टू पे माइनस द प्राइस पेड. सही, दिस इज देयर विलिंगनेस. अब वो बोल रहे हैं कि कौन सा प्राइस ऐसा है जहां पे इन सबका कंज्यूमर सरप्लस सेम आ जाए. डी. डी में क्या होगा भाई? जेन इज विलिंग टू पे 10 माइनस शी एक्चुअली पेड 6, चलो 4. सैरा का क्या है? 8 minus 4 is 4, and then you have Yasmin, it is 6 minus 2. हाँ, तीनों का क्या आ रहा है? 4 4 and 4. या तो it should be 6.
Good job. A government fixes a minimum price for a service. What will be the outcome of such a policy? Government ने minimum price लगाती है तो क्या outcome होगा इस policy का? What will be the outcome? Demand will fall if the minimum price is below the equilibrium. Minimum ये price तो below गलत है. equilibrium will be effective. Demand will rise. नहीं, demand rise नहीं करेगी. Quantity demanded will fall. Production will fall if the minimum price is above the equilibrium. Production fall नहीं हाँ, ये करेगी. डी हो Quantity सकता supplied will है. डी हो increase सकता है करेगी. सर. ठीक है. Production will stay the same if the minimum price is below the equilibrium. हाँ, ये होगा. अगर आपका minimum price equilibrium से below है, again ineffective हो जाएगा. The production will stay the same. Look at question number 15. The diagram illustrates the effect of placing a specific text equal to JM. Say भाई ये text है, parallel difference on a good. Which area represents the total text receipt? The total text receipt क्या हो जाएंगी? JM, which is your per unit text, multiplied by the quantity. ये हो गई नई quantity. So this area is total text receipt. डी होगा. for the government. XJZM होना चाहिए. XZ XJZM MZ ये वाला 15 D. Look at question number 16. The diagram shows the demand curve D1 and the supply curve S1 for a good. ये आपका supply curve है and this is your market. The government decides to pay producers a specific subsidy for each unit. एक specific subsidy मिल रही है supply to the market. Which curve shows the new effective demand and supply? Now what will be the new effective demand and supply अगर वो subsidy दे दी गई? What will happen अगर आप subsidy दोगे तो? सर प्राइस कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी, इतना तो मुझे पता है. The supply curve will shift outwards to S2. Expenditure for the UK in the fiscal year of 2016 is estimated at 760 billion. The top 5 areas of expenditure are given below. Pensions, healthcare, welfare, education, defense. ये सारे हैं total top 5. So what is the total amount spent on transfer payments? Transfer payments पे कौन सा amount जा रहा है total? 153 प्लस सर वेलफेयर आएगा इसमें. पेंशन आएंगी, सही है. वेलफेयर तो ये आएगा. आपकी ट्रांसफर पेमेंट है और वेलफेयर भी आना चाहिए, सही है. वेलफेयर पेमेंट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस. बाकी हेल्थ केयर तो प्रोडक्शन हो रही है, एजुकेशन में भी हो रही है, डिफेंस में भी हो रही है. सो 153 प्लस 111 विल बी 264 ये हो जाएगा. What is likely to occur when a government privatizes public sector monopolies? अगर government privatize करते public sector monopolies को तो क्या होगा? Consumer choice will increase, employment will increase in the short run, innovation will be discouraged, production of the goods, public goods will increase. ए होगा सर. ये हो जाएगा सही, क्योंकि obviously अगर आप government private sector privatize कर देती है public sector monopolies को, then it will give more room to competition, it will give more room to efficiency, there will be more choices available for the consumers. In a closed economy, a rise in aggregate demand is needed to increase output in the country. What is necessary to achieve this increase in output in the economy? Aggregate demand का increase जरूरी है output को increase कराने में. What is necessary to achieve this? Aggregate demand कैसे increase होगी? सी. Government spending be less than नहीं 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 डी होगा.
नहीं, reduce credit to lower inflation. अगर आप क्रेडिट को भी रिड्यूस करें तो कंजम्पशन नीचे चली जाएगी, इससे भी एग्रीगेट डिमांड। फ्री ट्रेड अलाउ इंपोर्ट्स तो से भी बी होगा सर, देखो बी होगा। ए होगा, बी भी नहीं होगा। अगर आप फ्री ट्रेड भी अलाउ कर रहे हो तो इंपोर्ट्स विल कम इन, इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो आपका नेट एक्सपोर्ट्स नीचे जाएगा, एग्रीगेट डिमांड नीचे जाएगी। ए होना चाहिए दैट यू हैव इनफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज। आपके पास एडिशनल कैपेसिटी तो हो, आप फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे हो। अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट भरोगे अगेन इट वोंट बी यूजफुल। आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा भी दो, आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा। The diagram shows the long run aggregate supply LRAS curve of an economy, at which equilibrium level of national income is a balance of trade surplus likely to cause the greatest inflationary pressure. Now, if you have a balance of trade surplus x minus m greater than zero, which point will this cause greatest inflationary pressure? सबसे ज्यादा प्राइस लेवल कहाँ पड़ेगा? डी पे सर। डी पे। डी पे अगर आप एग्रीगेट डिमांड को आउटवर्ड शिफ्ट कराओगे प्राइस लेवल सबसे ज्यादा बढ़ेगा। A government succeeds in changing a current account deficit into a current account surplus. Why might this current account surplus increase the country's inflation rate? करंट अकाउंट का सरप्लस आपका इन्फ्लेशन रेट क्यों इंक्रीज करता है? रिड्यूस नहीं करता, एक्सचेंज रेट को रिड्यूस नहीं करता, इट रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, raises the aggregate demand. हुआ सर। हाँ, if you have a current account deficit and you turn into current account surplus, it means x minus m should be greater than zero. So your aggregate demand will shift outwards from AD naught to AD1. Look at question number 22. The diagram shows Greece trade position with the European Union and Russia between 2005 and 2014. सही है, आपके पास ट्रेड पोजीशन आ रही है। These are imports from EU. रशिया जो इंपोर्ट कर रहा था, these were exports to EU. And then you have imports from Russia. ये है रशिया से imports and ये है export to Russia. The diagram shows ये ग्रीस की ट्रेडिंग पोजीशन है। What can be concluded about the period between 2005 and 2014? Greece annual trade deficit with the European Union rose continuously. नहीं, रोज तो नहीं हुआ कंटिन्यूसली, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके इंपोर्ट ज्यादा थे और एक्सपोर्ट्स कम थे, लेकिन आगे जाके आपने अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर लिया और इंपोर्ट्स को कम भी कर लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली फॉल कर रहे हो विद योर ट्रेडिंग पोजीशन फ्रॉम द विद द यूरोपियन यूनियन। बी क्या है? ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद द ईयू वाज लोअर इन 2014 देन इन 2005। ये हो सकता है क्योंकि ये सही है, ये कितना था पहले, सही। अब 2005 में कितना? 2005 में बहुत ज्यादा था, ये होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। सी क्या है? ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद ईयू फेल कंटिन्यूअसली। ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यूअसली फेल नहीं कर रहा, सही है, मतलब ऊपर भी गया नीचे भी आया। डी क्या है? ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद ईयू वाज स्मॉलर देन द ट्रेड डेफिसिट विद रशिया। नहीं, एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद रशिया वाज मच स्मॉलर। ये है ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ, तो ईयू के साथ ज्यादा है, ये भी गलत है, बी होगा करेक्ट ऑप्शन। Moving to 23, there is a rise in exchange rate of US dollar. US dollar का exchange rate बढ़ गया, which would cause the greatest increase in the US current account deficit. current account का deficit कैसे बढ़ेगा? There is a rise in exchange rate of the US dollars, which would cause the greatest increase in the US current account deficit. Current account का deficit कैसे increase करेगा? अगर आप a low rate of domestic inflation. Greatest increase तो सर इन्फ्लेशन नहीं होगी तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे ना, अपना सामान नहीं महंगा होगा। नहीं 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 नहीं, हाई लेवल देखो, अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन होगा तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं, सही है, वो भी
आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया, सही है। What would cause the greatest increase in the US current account deficit? कि high current price account के elasticity deficit, of demand for high import. price elasticity of demand for imports. अगर आपकी पीईडी ऑफ इंपोर्ट्स इज इलास्टिक तो क्या होगा, वो सस्ते हो गए इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स सस्ते हुए, आना शुरू हो गया आपकी क्वांटिटी में ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड वुड इंक्रीज फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा आपका। Since 2000, a country's export prices have increased on average of 50% and import prices by 25%. What is the current figure of the country's terms of trade? क्या होगी current figure? 25% उसको 75 150 over 75 होगा into 100. नहीं, country's export prices have increased on average of 50% ना, 50% का क्या मतलब है, export prices का 150 हो index, गया। and its import prices rises by 25%. It should be अच्छा import, oh 125. sorry, rise हुए हैं, sorry. So now what will be? What is the current figure? Let me check. ये क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है इसमें? तो कैलकुलेट कर लेता हूँ। $120 सर। 120 कैलकुलेट कर लिया ना? Yes. Okay. Look at question number 25. Each diagram shows the production possibility curve for two economies, X and Y, which produces food and clothes. In which diagram would both economies benefit by specializing in the good in which they have comparative advantage and trading at an exchange rate of dollar or exchange rate of 1 unit of clothes is equals to 1.5 units of food. समझ नहीं आई सर। ये बोल रहे हैं कि ये सारे आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स हैं, सही है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन विच डायग्राम बोथ द इकोनॉमी को बेनिफिट, अगर वो स्पेशलाइज करती हैं उन चीजों में जिन पे उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं, विद द एक्सचेंज रेट ऑफ दिस वन क्लोथ शुड बी इक्वल टू 1.5। मतलब बाकी जो दो कंट्रीज हैं, एक्स का और वाई का जो रेशो है वो इस एक्सचेंज रेट के बीच में आना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड वोंट बी बेनिफिशियल फॉर देम, फिर ट्रेड बनना उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, सही है। सो लेट्स सी, देखो पहली बात तो ये है, बी में तो होगा ही नहीं, पैरेलल है, सही है। पैरेलल का मतलब होता है सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आपका ट्रेड नहीं होता, सही है। अच्छा, ए देखो क्या हो रहा है, राइट। ए में एक्स के लिए क्या है, 3 फूड फॉर 1 क्लोथ, सही है एक्स के लिए, और वाई के लिए क्या है, वाई के लिए यू हैव 4 food and 2 clothes, which mean 1 cloth is equal to 2 food. ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, ये दोनों इस रेशो से बाहर है, सही है, एक्सचेंज रेट के रेशो से, तो ये भी नहीं होगा। सी देखो क्या है, सी में हो रहा है 5 clothes for 5 food, which mean 1 cloth is equals to 1 food for country Y, और country X के लिए क्या हो रहा है, 2 clothes for 4 food, which mean 1 cloth should be equal for 2 food। ये देखो ये आ गया रेशो, ये यहाँ पर आ गया कंट्री वाई का, ये यहाँ पे आ गया कंट्री एक्स का, और इन दोनों के बीच में आ गया एक्सचेंज रेट का रेशो। दैट इज व्हाई कंट्री सी विल बी द कंट्री वेयर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी विल बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल। राइट सर। अच्छा जी, अगला देखो, 4 countries ABCD trade internationally. Each circle in the diagram represents a free trade area between the countries within the circle.
a country can belong to more than one free trade area. Countries outside of the circle face trade barriers. Which country has the greatest opportunity to benefit from international trade? कौन सी कंट्री के पास सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि वो सी इंटरनेशनल के ट्रेड पास, से? सी के पास। सी के पास की बेटा, इंटरनेशनल फ्री ट्रेड से, फ्री ट्रेड। ये तो सी तो बाहर है ना, सी तो बाहर है। सी ओ, में तो trade करेंगे जो जिसके सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा एरिया? बी। बी सारे सर्कल्स में आ रही है, सारे ट्रेड कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनका पार्ट है बी। सो बी विल बी द ओनली कंट्री व्हिच विल बेनिफिट मोस्ट बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। सर लुक एट सी भी क्वेश्चन तो नंबर। सी कैसे बाहर है, मुझे समझाइएगा, मुझे समझ नहीं आई है। भाई ये देखो, ये एक ट्रेड एरिया है, ये वाला। हाँ। इसमें ए बी एंड सी, एक ट्रेड एरिया ये वाला। इसमें ए बी और जो भी कंट्रीज वहां पर होंगी और इस वाले सर्किल में, सही है। एंड इसी तरह से आपके पास एक और सर्किल है डी वाला, जिसमें बी और डी है, सही है। अब वो बोल रहे हैं कि सी वाला जो है, सी बेनिफिट तो करेगा, सही है, हम्म। लेकिन सी किसके साथ बेनिफिट करेगा? सी विल ओनली ट्रेड विद ए एंड बी। बी क्या कर रहे हैं? बी विल ट्रेड विद डी, बी विल ट्रेड विद ए, डी विल ट्रेड विद सी। सो बी का सबसे ज्यादा फायदा। हाँ, राइट। A small trading country decides on a policy of import substitution by producing it for itself. अब वो अपने लिए खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं rather than importing abroad. What is the सी most होगा likely reason इसका। for to protect the local industries from foreign competition? एक है to follow the नहीं, to influence the world prices, no they cannot do substitute imported, नहीं, हाँ सही सी होगा। Look at 28. The diagram shows the government revenue and expenditure for the 3 years. ये revenue था, ये expenditure है। अब फिर revenue कम हो गया, expenditure बढ़ गया, फिर revenue मजीद कम हो गया, expenditure ज्यादा हो गया। What can be concluded from the diagram? A budget deficit was replaced by a budget surplus. A government borrowing requirement emerged. The economy moved from a recession into a boom. The yield from taxation continuously increased. डी। It should be B. Government borrowing requirement emerged ना। पहले आपके कब पैसे ज्यादा आ रहे थे, खर्चा कम था, अब पैसे कम आ रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो गया। गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो बिकॉज यू आर इन अ बजट डेफिसिट। डी का मतलब है यील्ड फ्रॉम टैक्सेशन इंक्रीजेस, मतलब आपकी टैक्सेशन इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग। सही है जी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 29। अ कंट्री विद अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हैज अ करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट का सरप्लस है उनके पास, मतलब x minus m is greater than 0 and their exchange rate is fixed. What is the most likely to reduce surplus? Surplus reduce कैसे होगा? Higher interest rates, higher investment spending, higher tariffs, higher। हायर इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है, या फिर हायर टैरिफ्स तो सर इंपोर्ट्स पे होती है ना सिर्फ। हाँ, टैरिफ नहीं तो होगा, टैक्सेस भी नहीं होंगे बिकॉज दे आर एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग। इंटरेस्ट रेट भी ना एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी है, सही है। इट शुड बी हायर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, सही है। सो दिस इज लाइकली टू रिड्यूस द सरप्लस, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट फिक्स है। इफ यू हैव हायर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग rather than producing capital consumer goods, you will be producing capital goods, आप कैपिटल पे लग जाओगे, कंज्यूमर जो है वो आप इंपोर्ट करोगे। look at question number 30. In recent years an economy has experienced changes in the price level as shown. सही, ये आपके परसेंटेज ऑफ प्राइस लेवल है, ये यूं जा रहे हैं 2015 से डिफ्लेशन हो रही है। 15, हाँ इधर से डिफ्लेशन शुरू हो गई। Which government policy is most effective in reversing the trend shown in the price level? सही है, ये कौन सा ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा? Encourage firms to expand production through tax incentives. Introduce an income policy to directly control wage increase. C क्या है? Promote household savings by issuing saving bonds. And D डी reduce, होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करेंगे और मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे ना सर। हाँ तो सही है, ताकि आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाओ ताकि प्राइस लेवल ऊपर चले, सही है। ओके सर। ओके, सो गुड जॉब टुडे।